Right. Thank you, Ridhima, for that. And what we are getting, ladies and gentlemen, is a piece of breaking news now that's coming in at the top of the bulletin. Now, sources have told CNBC Awaz that the cabinet has approved additional subsidy of rupees 200 per LPG cylinder under the Prime Minister's Ujjwala scheme. Now, the total outlay expense for the government stands at 7,500 crore rupees. Now, OMCs, that are oil manufacturing companies, will get the subsidy from the government. So that's the piece of breaking news that's coming in, where there will be a 200 rupees subsidy on LPG cylinders. Remember, this is coming right ahead of those crucial state elections, ladies and gentlemen, and also in the run-up to 2024. So the outlay that the government has laid out for this big piece of breaking news that's coming in, this big move coming in when it comes to the welfare push of the Modi government, 7,500 crore is the outlay for the entire subsidy for LPG cylinders. A huge relief to people across the country when it comes to the rising prices of fuel. Now, a 200 rupees subsidy on LPG prices has been announced. This is what sources have told Network 18 when it comes to the entire welfare push of the Modi government, coming right ahead of the crucial state elections in Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan, and in the run-up to the 2024 Lok Sabha elections. A huge relief to the Aam Aadmi of India, ladies and gentlemen. A price cut for LPG has been approved by the central government, and 7,500 crore is the outlay that has been laid out by the government. I'm joined by my colleague Arunima, who's getting us this piece of breaking news. Arunima, over to you. Give us the details. So like you pointed out, this was a concern of the common people across the country, the rising prices, and the gas cylinder prices were a reflection of that concern about inflation. So ahead of election, government has decided, this is what Network 18 learns, the government has decided that under the Ujjwala scheme, 200 rupees relief could be given to people who are purchasing LPG cylinders. Already, there are certain sections which enjoy subsidy as far as their gas cylinders are concerned. Over and above that, 200 rupees per cylinder is the relief that the government is proposing. Cabinet that's what Network 18 learns. The cabinet has given the go-ahead for this. It could be notified any moment now. So it's a huge boost to the family income. 200 rupees per cylinder cut is definitely something that will be appreciated by those who are struggling with rising food, oil, and prices of daily goods and services. Absolutely, and the OMCs will get this subsidy from the government. Runima, at the same time, a huge political booster also for the BJP in the run-up to those crucial state elections in Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan, and in the run-up to the Lok Sabha elections, because one of the main charges from the opposition camp were rising prices. Yes, if you take the example of Rajasthan, Ashok Gehlot government has been constantly giving, freebies, as the BJP calls them, to the people of Rajasthan, and gas cylinder was one of them. Under the various schemes that have been announced by the Ashok Gehlot government, 500 rupees off on every cylinder, 500 rupees cash back in your account was one of the schemes that was announced in Rajasthan. Similarly, you saw in Karnataka also how the welfare measures that were announced in the run-up by the Congress government, their assessment is that it held them in good stead, and they benefited from those announcements, be it free food grains or be it free ride for women. So I think post that, the government has also recalibrated and taken into account the kind of sentiments on the ground as far as rising food prices, rising inflation is concerned, post which the decision has been taken. 200 rupees per gas cylinder, right. Network 18 learned, could be given waiver to each household. Right. I'm also joined by Lakshman Roy of CNBC Awaz. Mr. Roy, please go ahead and tell us, when it comes to this entire outlay of 7,500 crore, a huge subsidy for the Aam Aadmi of India, 200 rupees per cylinder. How does this play out in the weeks to come? देखिए, ये जो 200 रुपये सब्सिडी, एडिशनल सब्सिडी है, और 9.59 करोड़ यानी अबाउट 10 करोड़ पीपल को ये फ़ायदेमंद होगा। ये सिर्फ उज्ज्वला स्कीम के जो बेनिफिशियरी हैं उनके लिए सब्सिडी बढ़ाई गई है, और अभी उनको सब्सिडी 200 रुपये पर सिलेंडर मिलता था, अब वो बढ़ करके 400 रुपये पर सिलेंडर होगा। गवर्नमेंट इसको एज ए रक्षाबंधन गिफ्ट के तौर पर प्रेजेंट करना चाहेगी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है कैबिनेट की, उसके बाद ये फैसला हो सकता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सिलेंडर दो तरह के होते हैं, एक नॉन सब्सिडाइज और सब्सिडाइज। जो उज्ज्वला स्कीम वाले सब्सिडाइज सिलेंडर है उसके लिए सिर्फ फैसला होगा, नॉन सब्सिडाइज के लिए नहीं है। अभी जो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर है उसमें
मुंबई में ये उसका दाम जो है 1102 रुपये 50 पैसे है एक सिलेंडर के दाम, और दिल्ली में 1103 रुपये है। उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो सब्सिडाइज सिलेंडर है सिर्फ उसके लिए पड़ेगा, और ये गवर्नमेंट अपने सब्सिडी अपने एक्सचेकर से पैसा खर्च करेगी, क्योंकि लगातार जो सरकार को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से डिविडेंड मिल रहा था, क्योंकि वो प्राइस कट नहीं कर रही थी, तो उसका भी एक फ़ायदा मिलेगा। और आपने अरुणिमा ने सही कहा कि इलेक्शन ईयर, तो सरकार ऐसे कई सारे अनाउंसमेंट आने वाले दिनों में करने वाली, आम लोगों को रिलीफ देने के लिए। इमीडिएट करने के पीछे वजह यह है कि इन्फ्लेशन का प्रेशर काफ़ी तेज़ी से था चारों तरफ से, तो सरकार के हाथ में इमीडिएट रिलीफ देने का एक तरीका था कि एलपीजी सिलेंडर के दाम घटा दिया जाए। वो सरकार ने किया है। बाकी और भी मेजर आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं। जी, और ये बताइए कि व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को टैकल करना इस गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दी थी कि एज द प्राइसेस आर राइजिंग दैट दे विल टैकल ऑल दीज इन्फ्लेशनरी काइंड ऑफ फोर्सेस व्हिच आर अफेक्टिंग द आम आदमी। वो क्या क्या फैक्टर्स थे जो ये प्राइस राइज एग्जैस्परेट कर रहे थे, उसको फ्यूल कर रहे थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ऐसा इंटरवेंशन दिया है? देखिए, इमीडिएट जो प्राइस राइज को फ्यूल कर रहे थे, इन्फ्लेशन बढ़ा रहे थे, उसमें था वेजिटेबल प्राइस है, जो सीजनल होता है, जो वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ते हैं, राइस की प्राइसेस, व्हीट के प्राइसेस। लेकिन उसको इमीडिएट ओवरनाइट कम करना सरकार के हाथ में नहीं होता है। सरकार ओपन मार्केट सेल करेगी फूड ग्रेन का, तो आने वाले 2-3 हफ्ते में दाम कम होंगे। वेजिटेबल प्राइसेस सरकार चाह कर भी बहुत कम नहीं कर सकती, वो सरकार के पूरे कंट्रोल में नहीं होता है। और लगातार डिमांड ये आ रही थी कि जब रॉ मटेरियल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे, तब तो आपने प्राइसेस बढ़ा दिए थे एलपीजी सिलेंडर के, पेट्रोल डीजल के। लेकिन जब दाम कम हो रहे हैं तब आप इसके दाम क्यों नहीं घटा रहे? तो सरकार मुझे लगता है राइट टाइम का इंतजार कर रही थी। अब चूंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो पहला कट यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर में किया गया। आने वाले दिनों में अगर सरकार पेट्रोल डीजल के टैक्स में भी कटौती करे, तो मुझे लगता है बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी, और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मेजर स्टेप है इलेक्शन से पहले। उसके बावजूद अगर हम देखें स्टेट गवर्नमेंट्स, मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट, दूसरे बीजेपी गवर्नमेंट्स जो हैं इन द रन अप टू द 2024 लोकसभा इलेक्शंस, क्या और ऐसी सब्सिडी स्टेट लेवल से भी रोल आउट हो सकती हैं? बिल्कुल, ये सब्सिडी जो उज्ज्वला स्कीम होता है, उसके तहत अभी केंद्र सरकार 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी देती थी, जो अब 400 रुपये हो गई है। अलग अलग राज्य अपने हिसाब से भी सब्सिडी देती हैं। उस सब्सिडी में भी आने वाले दिनों में आप अच्छी खासी बढ़ोतरी होता हुआ देख सकते हैं। खासतौर से जिन राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, उन राज्यों के सरकार के ऊपर इस फैसले के बाद ये दबाव बनेगा कि वो अपनी तरफ से भी उज्ज्वला स्कीम के तहत सब्सिडी की रकम बढ़ाएं। तो हो सकता है कि जो हम 400 रुपये सब्सिडी घटती हुई दिख रहे हैं उज्ज्वला स्कीम में केंद्र सरकार की तरफ, वो इफेक्टिवली कंज्यूमर को और ज़्यादा राहत मिले, क्योंकि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जाहिर तौर पर प्रेशर होगा। और पहले भी हमने देखा है, जब केंद्र सरकार ने उज्ज्वला स्कीम के तहत सब्सिडी दी, सब्सिडी की डेडलाइन बढ़ाई, तो राज्य सरकारों ने उसी ताल में ताल मिलाते हुए सब्सिडी देने का ऐलान किया था। और चूंकि राजनीतिक लिहाज से ये इलेक्शन काफ़ी क्रूशियल होने जा रहा है, इन्फ्लेशन एक सबके लिए एक बहुत बड़ा हथियार बना एक दूसरे पर हमला करने के लिए, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार भी आने वाले चंद दिनों में ही बहुत ज़्यादा मौका नहीं देगी कांग्रेस को, बीजेपी को कहने के लिए कि हमने घटा दिया, देखो राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं। तो बहुत जल्द राज्य सरकारों की तरफ से भी उज्ज्वला स्कीम में सब्सिडी में और ज़्यादा बढ़ोतरी होते हुए आप देख सकते हैं। तो राज्य सरकारें भी ताल से ताल मिला सकती हैं। दैट्स द पिच कमिंग इन फ्रॉम लक्ष्मण रॉय ऑफ CNBC आवाज।